आर्टरी के अंदर में जाके कोई क्लॉट, ब्लड सप्लाई रुक, या फिर आपकी जो आर्टरी है ये आर्टरी बर्स्ट हो गई है. सो दीज आर द टू रीजंस. दिस इज व्हाई देयर कैन नॉट बी वन ट्रीटमेंट. तो जैसे हम कहते हैं कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो आप टॉर्गोस्टैटिन ले लीजिए, एस्पिरिन ले लीजिए, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले लीजिए. वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज इमेजिन अगर आपको एक आपकी जो आर्टरी है वो बर्स्ट हो गई है एंड आप एक और इसके अंदर में ब्लड थिनर डाल देते हैं जस्ट ब्लाइंडली, देन योर जो यहाँ पे डैमेज है और भी ज्यादा ब्लड लॉस यहाँ से आपका हो सकता है. So very important for you to understand this, that there cannot be just one prong approach to this. आपका सबसे पहला when a person is having the symptoms of a stroke is to get that person into a CT scan to see कि क्या hemorrhagic stroke है या ischemic stroke है. Ischemic stroke वो है जो एक blood vessel के अंदर में एक clot जाके फंस गया है and आपका blood supply रुक गया है, या फिर is it a hemorrhagic stroke which means that एक blood hemorrhage हो गई है, आर्टरी बर्स्ट हो गई है एंड ब्लड वहां से निकल रहा है. दोनों का ट्रीटमेंट एकदम अलग है. अगर आप एक हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस दे देंगे तो ये और ज्यादा डैमेज होगा एंड दैट पर्सन माइट इवन डाई. So this is very important to know this. And similarly, अगर एक anyway it's a in a ischemic stroke you're supposed to give blood thinning medication, that is the correct treatment. And in hemorrhagic stroke the only treatment is to do surgery or do some sort of clipping, or basically you have to enter inside the cavity. So you have, this is the most important thing. अब तक मैंने जो बोला ये सबसे important था. इसके बाद में जो भी मैं बोलूंगी that is, if you know it, it's a bonus. If you don't, बट देन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि स्ट्रोक हुआ है, एस्पिरिन खा लेते हैं. अगर आपका हेमरेज है और आपने एस्पिरिन खाई तो और नुकसान हो सकता है. So now the next part is also something that you should know. What are the warning signs of a stroke? So इसमें एक बहुत famous है ये acronym इसका, ये एक shortcut है इसको learn करने का. So you have to learn the word fast. So you have to act fast when it comes to a stroke. And क्यों हमें act fast करना है इसके बारे में discuss करेंगे. But when you have a stroke, ये symptoms को आपको ध्यान में रखना है. So you have to see if the face, F for fast and F for face, the face में कोई numbness है या फिर कोई drooping है, so that is something that you need to take care of. Arms, so जब भी आपको stroke होता है usually आपको एक side में आपको कहीं ना कहीं कोई paralysis होएगी या muscle weakness होएगी. दोनों आर्म को ऊंचा करने बोले और दोनों आर्म को ऊंचा करते वक्त अगर एक आर्म थोड़ा नीचा रहता है तो this person might be having a stroke and you need to be very careful. You need to rush him to the hospital. Don't try to treat him there or anything. Just rush them to the hospital, because अगर immediately दवा मिल गई या फिर immediately उनका अगर हमने treatment कर दिया तो इनकी जो recovery period है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी and he will be fine very soon. तो स्पीच पे भी बहुत असर पड़ता है when a person is having a stroke. So the speech can be slurred या फिर garbled. वो कुछ बहकी बातें कर सकते हैं. वर्ड्स को जो सेंटेंसेस हैं बहुत ही अजीबोगरीब सेंटेंसेस हो सकता है बोल रहे हो सकता है एक सेंटेंस कंप्लीट ना कर पा रहे हो. जैसे आप समझो कि कभी किसी के मुंह में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो एंड वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उस तरह की स्पीच उनकी हो सकती है. एंड दैट इज F फॉर फेस, A फॉर आर्म्स, S for speech, and T for time. So time is another thing that you need to take care of. You have to rush. You cannot wait. Time आपके पास में ज़्यादा नहीं होगा. So then now moving on. So this is the fast. ये बहुत ज़रूरी है याद रखना. फेस का ड्रूपिंग हो सकती है. दोनों आर्म्स को उठाने बोलें और एक आर्म अगर ड्रूप कर रहा है, अपने आप गिर रहा है या बहुत कम उठ रहा है, and this could be stroke. स्पीच एंड देन टाइम. सो इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके इसको हम लोग बी फास्ट भी बोल सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी फास्ट. सो बैलेंस, अगर किसी का बैलेंस थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, आंखों में अगर विजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, विच इज E for eyes, F for face, A for arm, S for speech and T for time remains the same. Next, फास्टर एक और एक्रोनिम है. सो इसमें अगेन F फॉर फेस, A फॉर आर्म्स, यहाँ पे इन्होंने S से स्टेबिलिटी कर दी है, स्पीच नहीं है. सो यहाँ पे वो बैलेंस वाली बात आ गई. T फॉर टॉकिंग, T फॉर टॉकिंग, E फॉर आईज. सो आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, विजन में प्रॉब्लम है, कोई ब्लर्ड विजन है, टनल विजन है, फ्लोटर्स दिख रहे हैं, इस तरह का कुछ भी अगर हो रहा है, you need to again be very careful. You need to rush to the hospital and react
call your emergency services and rush them to the hospital. इनका एक CT scan होना है, that is what needs to be done immediately. अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, आप कहीं और एक CT स्कैन करा के आप उसकी रिपोर्ट के साथ आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां हॉस्पिटल जाने के बाद में सबसे पहला काम यही होगा कि उनकी CT स्कैन होगी. So this is what you can remember. The stroke symptoms are many, but already we've discussed it, so I'll not get into it again. I'll just move on. So don't wait and see. Time is of the essence. क्यों क्यों हम टाइम के बारे में इतना बोलते हैं? So even if the symptoms are subtle and they go away, take them seriously, क्योंकि ये आगे आने वाला एक धमाका का संदेशा हो सकता है. So you need to be very very careful about this. If you or someone else has stroke symptoms, don't take a wait and see approach. कुछ मिनट ही लगते हैं ब्रेन सेल्स को डाई होने में, मरने में, इरिवर्सिबली डैमेज होने में. एंड द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे जैसे आप समय आप गंवाएंगे, वैसे वैसे का जो डिसेबिलिटी आगे जाके होने का या फिर एक परमानेंट पैरालिसिस होने का जो रिस्क है, ये बढ़ते जाता है एज टाइम पासेस. सो अगर जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं, जैसे कि जो TPA हम देते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक में, वो 4.5 घंटे में अगर हम ना दें तो देयर कैन बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. सो वी नीड टू be very careful. Again, as I said, don't wait. इस तरह के symptoms आते हैं, get checked immediately. अगर कोई problem होगी, we can definitely look into it and see what is the again and give the treatment accordingly. Problem नहीं होगी, they'll send you back. बस इतना ही होगा, but don't delay the treatment. ड्यूरिंग अ स्ट्रोक टाइम इज ऑफ द एसेंस. अगेन देखिए, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 4.5 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है. अगर 4.5 घंटे के बाद में आप पहुंचते हैं तो देन TPA का देने का इतना सेंस नहीं रहता है. बट अगेन एज आई सेड दैट द गाइडलाइंस हैव सेड दैट 24 घंटे तक भी इसको हम दे सकते हैं. बट द बेस्ट रिजल्ट विल बी इफ यू गिव इट विद इन 4 to 4.5 hours. सो सिम्टम्स जो हैं हमने अब ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. आई विल मूव ऑन. So whenever if you are a caregiver and आपके सामने किसी को stroke हो रहा है, so make sure that the person is in a comfortable position. कहीं पे tongue bite ना हो जाए या लूज क्लोथिंग नहीं पहनी हुई है, तो जस्ट ट्राई टू लाइक सॉर्ट ऑफ फिक्स दैट. एंड उनकी एक कंफर्टेबल पोजीशन में उनको होनी चाहिए. उनको चोट लगने की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. दिस पर्सन शुड बी लाइंग ऑन वन साइड, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, अपनी बाएं तरफ. उनको बोलिए सोने के लिए, और हेड जो है ये थोड़ा सा रेज्ड रहेगा. तो इस सिचुएशन में इनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे. एज मच एज पॉसिबल यू विल ट्राई टू मेंटेन दिस. So again, if a person is having a stroke, you have to see if they are breathing. If they are not breathing, you can even you can perform a CPR. And अगर उनको difficulty हो रही है breathe करने में, तो जो भी उनकी constrictive clothing है, वो उसको आप ढीला कर सकते हैं. So don't panic. That is also one very important thing. So this is the first aid that you have to do in case of a stroke. So we started off with seeing if they are breathing or not. We have to be calm. We are not allowed to panic in front of a patient. उसके बाद में अगर ठंड है तो then you can cover them with a blanket. If they are wearing very tight clothing, you need to loosen that. उनको कुछ भी खाने को और पीने को ना दें. अगर उनको if they are thirsty or something like that, and if they are very well aware, then you can just give them very tiny sips of water. but ज़्यादा पानी पीने के लिए उनको नहीं देंगे, खाना खाने के लिए नहीं देंगे. They might be headed for a surgery. and अगर बहुत कुछ खाया पिया होगा तो then that will be delayed and उसमें उनको problem होती है. तो ये आपको नहीं करना है. If the person is showing any weakness in a limb, avoid moving them. आप इनको हिलाइए मत, क्योंकि हो सकता है कहीं पे clot हो, dislodge हो जाए. There might be a problem. So don't move them too much. Observe the person carefully for any change in condition. उनको आप continuously जब तक आप hospital लेके जा रहे हैं, इनको observe करते रहिए. So there are 3 types of stroke. There can be an ischemic stroke, there can be a hemorrhagic stroke, and there can be a mini stroke. So an ischemic stroke is जो मैंने आपको बताया कि clot के अंदर में एक artery के अंदर एक clot होती है. This is the blockage in the artery. A hemorrhagic stroke is when the blood vessel has ruptured and now the stroke is in play.
मिनी स्ट्रोक इज अ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ये टेम्पररी ब्लॉकेज होती है, आर्टरी थी लेकिन खून के प्रवाह से वो बह गई। सो दिस कैन, दे डोंट यूजुअली कॉज परमानेंट डैमेज, बट देन ये अगेन दिस माइट बी अ प्रेमोनिशन फॉर अ फ्यूचर स्ट्रोक। तो इसमें इसके बाद में अगर आपको टीआईए हुआ है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ट्रीटिंग द कॉज of the stroke. If it was hemorrhagic stroke and it is caused by BP, then आपकी BP की medicines regular होनी चाहिए। सॉरी, ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज ड्यू टू द ब्लॉकेज, एंड आपको देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन statins and you are on blood thinning medications. So what I was saying about the hemorrhagic stroke is कि कभी भी किसी को second stroke भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक stroke आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। So whenever you have a stroke, then जो भी आपका cause of stroke था, you have to treat that very very carefully and you have to be thorough with that. So people who recover from stroke, they may experience these after effects. So of course इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी जिनको भी स्ट्रोक आता है तो कुछ समय तक, हो सकता है टेम्पररी हो सकता है परमानेंट हो, बट दीज प्रॉब्लम्स माइट हैपन। वीकनेस एंड पैरालिसिस हो सकती है, स्पैस्टिसिटी, आपको एक स्टिफनिंग, मसल स्टिफनिंग हो सकती है। आपके जो सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आपको आपके देखने की जो विजन है वो थोड़ी ऑल्टर हो सकती है। यू नो in your sense organs you might feel a change, and this might be temporary। ये फिजियोथेरेपी के साथ में, बिहेवियरल थेरेपी के साथ में ये सब कुछ ठीक हो सकती है if you are regular with that. So memory, attention or perception problems might be there. There might be depression, there might be fatigue, and there might be vision problems and behavior changes. So how do you prevent a stroke? You have to, so this is what we are talking about. You have to live a healthy lifestyle. You have to live a non-inflammatory lifestyle. आप ज़्यादा रेड मीट ना खाएं, आप फाइबर ज़्यादा खाएं, नट्स एंड सीड्स को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें, बहुत ज़्यादा सोडियम ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, हेल्दी फैट्स खाएं खाली, रिफाइंड शुगर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें, रिफाइंड ग्रेन्स को कम्प्लीटली, चीनी चावल मैदा को आप अवॉइड करें कम्प्लीटली, एंड तेल घी जो है इसको भी आपको महीने में आधा किलो से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। दिस इज व्हाट आई वुड से। यू हैव टू इंक्रीज द एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग। if usually people are unfit, people who have lifestyle diseases, they are unfit. So ये आपको मूवमेंट बनाए रखना है अपनी बॉडी का, कम से कम 15 to 20 minutes you have to walk every single day. इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस twice a week. लिमिटिंग और क्विटिंग टोबैको यूज। सो अगेन मैंने बोला है टोबैको से कुछ भी आपको शरीर में आराम नहीं मिलता। सो टोबैको शुड बी कम्प्लीटली, you must quit it. Alcohol can be had in moderation, and आपकी जो भी दवाइयाँ हैं you have to take that regularly. So usually what is the first diagnostic test? I've told you this, that it is the CT scan of the head, which is one of the first tests used for a stroke. A CT scan can show bleeding in the brain or damage to brain cells. So अगर bleeding नहीं दिखती हैं and we can see some evidence of an ischemia, then we can give the treatment accordingly. So what happens when you have a stroke? I had told you that you might be, कोई मसल वीकनेस हो सकती है, फेशियल ग्रुपिंग हो सकती है, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ स्ट्रोक? वी डिस्कस दिस। कैन अ पर्सन हैव अ सेकंड स्ट्रोक? दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको एक बार स्ट्रोक हो गया है and you are not treating the cause, if you are not moving towards an anti-inflammatory lifestyle, you can definitely have a second stroke. So be very careful and try to manage your lifestyle habits accordingly. So what is the golden period in a stroke? I will discuss this soon. But yes, अगर आपको ischemic stroke है, then you will have to be treated within 4.5 hours. This is what I wanted to discuss. देखिए, जब हमें स्ट्रोक होता है, कोई भी डैमेज होता है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर कुछ ऐसे ब्लड ब्रेन सेल्स हैं जो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाते हैं। 1 घंटे के अंदर में मोर ऑफ द ब्रेन टिश्यू डाइज, एंड आपकी रेड वाला जो पोर्शन है, दिस इज इरिवर्सिबल डैमेज, एंड ग्रीन वाला है जो ये रिवर्सिबल है। सो अर्जेंट ट्रीटमेंट कुड स्टिल लिमिट द डिसेबिलिटी। अब 3 घंटे में आते हैं तो और ज्यादा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, एंड द विंडो इज क्लोजिंग।
So अभी भी ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. अगर 6 घंटे निकल गए तो then there is a very little chance that disability नहीं होगी इसको इनको लाइफ लॉन्ग. सो अगेन जो डिजीजेस हैं ये जो थोड़े बहुत सेल्स जो इरिवर्सिबली लॉस होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पनसेशन दैट गोज ऑन एंड ये पर्सन जो है इनको ज्यादा परेशानी नहीं आती. बट अगर आपने वो गोल्डन आवर जो है ये लूज कर दिया देन यू विल बी इन ट्रबल. सो व्हाट हैपेंस व्हेन दे कम टू अ हॉस्पिटल, तो सस्पेक्टेड स्ट्रोक पेशेंट ही अराइव्स, फिर 10 मिनट के अंदर अंदर देयर इज अ क्विक हिस्ट्री दैट इज डन एंड लैब वर्क इनिशिएशन हो जाता है. And then the stroke team is notified. CT scan within 25 minutes the CT scan is initiated. जैसा मैंने बोला CT scan is of paramount importance. This is really important. एंड इसके बाद में जैसे ही सीटी लैब्स जो हैं ये आपके इंटरप्रेट हो जाते हैं, हम देखते हैं कि हेमरेज है कि इस्कीमिया है, एंड देन वी कैन गिव द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट. सो व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एन इस्कीमिक स्ट्रोक? यू कैन गिव एन आईवी इंजेक्शन ऑफ द टीपीए विद इन 4.5 hours. इफ इट इज एन इस्कीमिक, अगर ब्लॉकेज है तो हम टीपीए दे सकते हैं. हाउ शुड एन इमरजेंसी पेशेंट मैनेज स्ट्रोक? सो ये एक गाइडलाइन एक और है कि अगर बुखार हो रहा है, टेम्परेचर जो है इसको हमें लोअर, वी हैव टू कीप इट एट नॉर्मल लेवल, और यू कैन गिव पैरासिटामोल फॉर दिस. फीवर अगर है तो एंटीपायरेटिक्स कैन बी गिवन. हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में? ब्लड थिनिंग मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो इसको हमें बंद करना होता है, एंड यू मे बी गिवन ड्रग्स और ट्रांसफ्यूजन्स टू काउंटरैक्ट दिस ब्लड थिनर का इफेक्ट. अगर कोई ऐसा वारफारिन या आपने ले रखा है तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम कुछ दवाइयां दे सकते हैं. देन अल्टीमेटली यू वुड बी गोइंग इन फॉर सर्जरी और सर्जिकल स्लिपिंग. इसमें अगेन वी हैव टू बी वेरी वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. So why is time of the essence in a stroke? Everyone who's heard this video, I'm sure आपको पता है अब. What should I do if I think I'm having a stroke? If you think you are having a stroke, understand the signs and symptoms, rush to the hospital and speak to your doctor. So जब आपको स्ट्रोक होता है उसके बाद में अगर किसी को भी होता है, so there are these problems that you can just anticipate. आपको वीकनेस और पैरालिसिस हो सकती है, पेन, नमनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फटीग बहुत ज़्यादा हो सकता है, थोड़े मूड डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, डिप्रेशन की तरफ लोग जा सकते हैं. आपकी जो यूरिनरी और बाउल कंट्रोल all be fixed if you are regular with your physiotherapy. So this is something that you need to, physiotherapy hai, and a lot of therapy goes in after a person has had a stroke to sort of rehabilitate these patients. So in चीजों को ignore ना करें. This is really important. So there is a phenomenon called learned non-use. तो जब आप एक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे स्ट्रोक हो गया है, मेरा ये वाला हाथ काम नहीं करता, so now your brain starts understanding that I don't have to use this hand. But if you keep telling your brain that no, I will be able to use this hand, I will be able to use this hand, then ये इसको आप अपने brain के power से इसको आप वापस सही कर सकते हैं. So it is very important to stay positive after this. So this was one question I wanted to talk. Can a stroke be cured? So what is the answer? The answer is yes, it can be, but ये दो stages होते हैं. एक तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे देता है, उसके बाद में जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है, एंड ये लंबा प्रोसेस है, एंड इसमें पेशेंट की विलिंगनेस, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बी एब्सोल्युटली spot on with. सडन नमनेस और वीकनेस इन द इन द फेस, आर्म और लेग, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है. व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रोक? सडन कंफ्यूजन, सडन विजन प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं. सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस एंड सम क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. अमित कुमार जी का सवाल है, age 45, weight 74, low BP, pulse rate about 50 in the morning, fatigue, pain in hand, feet and left underarm. What to do for diagnosis? So pulse थोड़ी आपकी low चल रही है, so you can
come and speak to us. Actually, we do not do this diagnosis, online anymore. So you have to come to the, of course, you can come online only on the Zoom OPD, but आपको वहाँ आके हमसे बात करिए. You have pain in hand, feet, and left underarm. आप आके हमसे बात करिए. We'll figure out why you are having low BP and your heart rate. आप कुछ हो सकता है कोई बीटा ब्लॉकर ले रहे हो जो आपको you that maybe the dose is too much. We'll have to speak to you, and there is a lot of history taking that is involved. So I'll you know analyze that once you come and speak to us. Can you say the management of ischemic stroke? CT scan when to be done after stroke? Immediately, as soon as possible, a CT scan has to be done. Management of ischemic stroke would be giving blood thinning medications, but you have to first ascertain that there is an ischemic stroke. अगर hemorrhagic stroke है and अगर आप blood thinning medication दे देंगे, that person will collapse. That patient will collapse right then and there. So don't take any decisions on your hands. Let the doctors decide. Usually the ischemic stroke, you will be giving them TPA within 4.5 hours. Can one differentiate between ischemic and hemorrhagic stroke by clinical symptoms? You should not. Because अगर आप गलत हो गए और आपने गलत ट्रीटमेंट दे दिया, then that person will collapse in front of you. So you do not want that. आपको करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. The doctors even don't try to do that. We do not give. This is absolutely a no-no in clinical practice. You are not supposed to just assume that this person must be, इसको BP high रहता है तो ये इसको this must be a hemorrhagic stroke. हम ऐसा कभी भी नहीं करते. The first thing to do is CT scan of that patient to understand what is going on. Can untreated migraine lead to stroke? The migraine in itself cannot lead to a stroke, but जो risk factors migraine के होते हैं and जो contributing factors migraine के होते हैं वो ही stroke के लिए भी होता है. And yes, people who have migraine have a higher chance of developing a stroke. Role of discipline in stroke and dose. There is first aid में डिस्प्रिन का zero role है. You will not give it until and unless the patient has had a CT scan. अगर CT scan हो गया है, speak to the doctor. So and watch this episode from the beginning. Heat stroke versus normal stroke difference. Heat stroke is when your body जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी के वजह से जो आपका खून है, it is trying to release the energy, release the heat from your body, and आपको बहुत ज्यादा vasodilation हो चुका है और आपको चक्कर आके आप गिर गए हैं. A stroke is या तो आपकी blood vessel brain के अंदर में आपको ब्रेन के अंदर में ब्लड वेसल फट गई है या फिर एक ब्लॉकेज हो गई है. So there are two different things. Heat stroke is usually because of decreased blood supply to the brain because the blood is too busy taking care of releasing the heat from the body. Can ARV or ACE medicine help in reducing stroke? Depends on which stroke it is. Can wine help in reducing stroke? I don't want to comment on that. Is stroke hereditary? I wouldn't say stroke is hereditary, but yes, the contributing factors, lifestyle factors, these are all something that you अगर आप घर में ही you are having a lot of unhealthy food all the time, and that is something that sort of might be running in the family. Hypertension is running in the family. Higher cholesterol is running in the family. So yes, it can help. Can 80 milligram atorvastatin, Nidesh ji हाथ जोड़ के आपसे विनती हैं, understand that there are two different kind of strokes that happen in a person, and it depends कि कौन सा तरह का stroke है. उसकी वजह से depending on the kind of stroke, you will be able to administer the treatment. You cannot give 80 milligrams of atorvastatin because it is that is not the protocol to be followed. The protocol to be followed is get a CT scan, find out what kind of stroke it is. Yeah. So I think on that note, we will be ending the show today. Thank you.